S block elements 305 2 sodium hydrogen carbonate right pointing arrow sodium carbonate plus CO plus hydrogen oxide. In this process NH is recovered when the solution containing ammonium chloride is treated with calcium hydroxide. Calcium chloride is obtained as a byproduct. 2NH Cl plus calcium hydroxide right pointing arrow 2NH3 plus calcium chloride plus hydrogen oxide. It may be mentioned here that Solvay process cannot be extended to the manufacture of potassium carbonate because potassium hydrogen carbonate is too soluble to be precipitated by the addition of ammonium hydrogen carbonate to a saturated solution of potassium chloride. Properties: sodium carbonate is a white crystalline solid which exists as a decahydrate. Sodium carbonate minus 10HO. This is also called washing soda. It is readily soluble in water. On heating, the decahydrate loses its water of crystallization to form monohydrate. Above 373 K, the monohydrate becomes completely anhydrous of brine solution, contains sodium sulfate, calcium sulfate, calcium chloride and magnesium chloride as impurities. Calcium chloride, and magnesium chloride, are impurities because they are deliquescent, absorb moisture easily from the atmosphere. To obtain pure sodium chloride, the crude salt is dissolved in minimum amount of water and filtered to remove insoluble impurities. The solution is then saturated with hydrogen chloride gas. Crystals of pure sodium chloride separate out. Calcium and magnesium chloride, being more soluble than sodium chloride, remain in solution. Sodium chloride melts at 1081 K. It has a solubility of 36.0 grams in 100 grams of water at 273 K. The solubility does not increase appreciably with increase in temperature. Uses: 1. It is used as a common salt or table salt for S block तत्व 305 2 NaHCO3 जोड़ CO2 जोड़। इस प्रक्रिया में NH4Cl युक्त घोलकों से उपचारित करने पर NH प्राप्त होता है। कैल्शियम क्लोराइड उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। 2NH जोड़ 2NH3 जोड़। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि सोलवे प्रक्रिया को पोटेशियम कार्बोनेट के निर्माण तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इतना घुलनशील है कि इसे पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल में अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाकर अवक्षेपित नहीं किया जा सकता है। गुण: सोडियम कार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है जो डेकाहाइड्रेट के रूप में मौजूद होता है। 10HO इसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। ये पानी में आसानी से घुलनशील है। गर्म करने पर डेकाहाइड्रेट क्रिस्टलीकरण के अपने पानी को खोकर मोनोहाइड्रेट बनाता है। 373 के से ऊपर मोनोहाइड्रेट पूरी तरह से निर्जल हो जाता है। नमकीन घोल में सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धियां होती हैं। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl अशुद्धियां हैं क्योंकि वे विलेयशील हैं, वायुमंडल से नमी को आसानी से अवशोषित करते हैं। शुद्ध सोडियम क्लोराइड प्राप्त करने के लिए
कच्चे नमक को न्यूनतम मात्रा में पानी में घोला जाता है और अघुलनशील अशुद्धियों को हटाने के लिए फिल्टर किया जाता है। फिर घोल को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से संतृप्त किया जाता है। शुद्ध सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड की तुलना में अधिक घुलनशील होने के कारण घोल में बने रहते हैं। सोडियम क्लोराइड 1081 के पर पिघलता है। 273 के पर 100 ग्राम पानी में इसकी घुलनशीलता 36.0 ग्राम है। तापमान में वृद्धि के साथ घुलनशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है। उपयोग 1. इसका उपयोग आम नमक या टेबल नमक के रूप में किया जाता है। NaCO 373 K sodium carbonate plus hydrogen oxide carbonate. Part of sodium carbonate gets hydrolyzed by water to form an alkaline solution. Company plus H oxygen monohydrogen carbonate plus O uses. 1. It is used in water softening, laundering and cleaning. E. It is used in the manufacture of glass, soap, borax and caustic soda. E. It is used in paper, paints and textile industries. IV. It is an important laboratory reagent both in qualitative and quantitative analysis. Sodium chloride. Sodium chloride. The most abundant source of sodium chloride is seawater, which contains 2.7 to 2.9% by mass of the salt. In tropical countries like India, common salt is generally obtained by evaporation of seawater. Approximately 50 lakh tons of salt are produced annually in India by solar evaporation. Crude sodium chloride, generally obtained by crystallization and sodium carbonate. Sodium hydroxide, caustic soda. NaOH sodium hydroxide is generally prepared commercially by the electrolysis of sodium chloride in Kastner-Kellner cell. A brine solution is electrolyzed using a mercury cathode and a carbon anode. Sodium metal discharged at the cathode combines with mercury to form sodium amalgam. Chlorine gas is evolved at the anode. Cathode, Na plus A. Na amalgam left pointing arrow anode. Cl2Cl plus A. The amalgam is treated with water to give sodium hydroxide and hydrogen gas. 2 Na amalgam plus 2 H2O right pointing arrow 2 NaOH plus 2 Hg plus H. Sodium hydroxide is a white, translucent solid. It melts at 591 K. It is readily soluble in water to give a strong alkaline solution. Crystals of sodium hydroxide are deliquescent. The sodium hydroxide solution at the surface reacts with the CO in the atmosphere to form Na2CO. NaCO 373 के जोड़ सोडियम कार्बोनेट का कार्बोनेट भाग पानी से हाइड्रोलाइज्ड होकर क्षारीय घोल बनाता है। CO जोड़ HOHCO 3 जोड़ों उपयोग 1. इसका उपयोग पानी को नरम करने, कपड़े धोने और सफाई में किया जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन, बोरेक्स और कास्टिक सोडा के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग कागज, पेंट और कपड़ा उद्योगों में किया जाता है। ये गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण दोनों में एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला अभिकर्मक है। सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड का सबसे प्रचुर स्रोत समुद्री जल है, जिसमें नमक का द्रव्यमान 2.7 से 2.9% होता है।
भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में आम नमक आमतौर पर समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत में सौर वाष्पीकरण द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। कच्चा सोडियम क्लोराइड, जो आमतौर पर क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त होता है, और Na2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आमतौर पर कास्टिना सेल में सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा व्यावसायिक रूप से तैयार किया जाता है। एक नमकीन घोल को पारा कैथोड और कार्बन एनोड का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। कैथोड पर डिस्चार्ज किया गया सोडियम धातु पारा के साथ मिलकर सोडियम अमलगम बनाता है। एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। कैथोड ना जोड़ ए ना अमलगम एनोड Cl2Cl जोड़ ए अमलगम को पानी के साथ उपचारित करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस दी जाती है। 2 ना अमलगम जोड़ 2H2O2 NaOH जोड़ 2Hg जोड़ H सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सफेद पारभासी ठोस है। ये 591 के पर पिघलता है। ये पानी में आसानी से घुलकर एक मजबूत क्षारीय घोल देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल प्रस्फुटित होते हैं। सतह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल वायुमंडल में CO2 के साथ प्रतिक्रिया करके Na2CO3 बनाता है।